Hi, welcome to MCQ Academy. This is video number 3 in the series of videos that cover national income accounting for your board examinations. Before moving ahead, make sure that you are thorough with the concepts that were covered in the previous two videos. So let's begin. Now, before we move ahead, let us reconcile three most important concepts that we have learned till now because they are going to form the foundation of the concepts of national income accounting that we are going to build up from here on. These three concepts are: number one, the factor income, which refers to the income generated by the factors of production, that is, land, labor, capital, entrepreneur, in the form of rent, interest, wages, profit. The second concept that we learned was that of value added. Value added refers to the total utility added to a commodity in terms of money. The third concept that we learned was that of final expenditure, which refers to the expenditure incurred on the purchase of final goods and services. Now, we need to be very clear about the relationship between these three. As a consumer, when you pay for a commodity, when you make a final expenditure, that final expenditure has to be equal to the value added that has been carried out at different stages of production while that commodity was being produced. वापस जाइए उस एग्जाम्पल पे जहाँ पे अ फार्मर वॉज कन्वर्टिंग सीड्स इनटू wheat, then a flour mill owner was converting wheat into flour, and then a retailer was selling that flour to a consumer. Finally, when that commodity was purchased by the consumer, he paid for the value addition that was brought about by the farmer, the flour mill owner, and the retailer. And therefore, final expenditure will always be equal to value added. This monetary value of value added has to be distributed among various factors of production, which goes on to become factor income. This particular relationship is applicable for the entire economy as well, and therefore for an economy this relation holds true. That is, final expenditure incurred by all the sectors of an economy will be equal to the value added made at all the levels of production in an economy, and this has to be equal to the factor income, the total factor income generated in that economy. And therefore, as far as national income accounting is concerned, these three values, these three terms are synonymous to each other. और इसलिए एक इकोनॉमी में हमेशा फाइनल एक्सपेंडिचर, वैल्यू एडेड और फैक्टर इनकम एक दूसरे के बराबर होंगे. And it is because of this conclusion that we have got three methods of calculating national income, namely the income method, the expenditure method, and the value added method, which we will study very much in detail in the latter part of this unit. The next concept that we are going to learn from here on is that of aggregates of national income. But before that, we need to get into the very core of the basis on which the various classifications of national income and national product are made. Be very clear about a few terms. First of all, for an economy, as far as national income accounting is concerned, final expenditure, value addition, and income will be equal to each other. Secondly, income को हम प्रोडक्ट वर्ड से भी रेफर करते हैं. देयरफॉर अगर आपके पास में नेशनल प्रोडक्ट बोला जाए या नेशनल इनकम बोला जाए, दोनों का एक ही मतलब है. नाउ, national income or national product can have three basic classifications. Let's go on to understand these. Number one is the gross and net product. Now, before we go on to understand the concept of gross and net, we need to be very clear about the concept of depreciation. Let us spend some time to understand what depreciation means. Depreciation refers to reduction in value of a fixed asset over a period of time. But remember,
Not all reduction in values of fixed assets are to be treated as depreciation. The reduction in values of assets can be covered in two ways. Number one, by creation of depreciation reserve fund, and secondly, by way of insurance. The difference between the two can be understood by way of a simple example. Let's say I bought a car worth rupees 50 lakh and I know that the value of this car is going to become negligible. This car would become a scrap over next 10 years, and therefore I would need to replace this car after 10 years. Now, what I would do is I'll create a depreciation reserve fund, which refers to कि मैं हर साल 5 लाख रुपीस का एक फंड अलग निकाल के रखूंगा for next 10 years, which would accumulate an amount of 50 lakhs after 10 years. And therefore, at the end of 10 years, I will be able to buy a new car. Now, the reduction in value of this car is expected one. Expected out of number one, normal wear and tear. The tires of a car got worn out. The engine oil was required to be replaced. Engine घिस गया. ये सारी चीज़ें normal wear and tear में शामिल होंगे. Number two, the expected obsolescence. Number three, minor accidental damages. Now, the reduction in value of an asset because of these three reasons, which will be covered by creating a depreciation reserve fund, would be considered under depreciation. The reduction in the value of a fixed asset that will not be covered under depreciation is the one that has been covered by way of insurance. कौन सी चीज़ें इंश्योरेंस के लिए? इसी कार का जब आपने इंश्योरेंस लिया, यू गॉट इट इंश्योर्ड अगेंस्ट मेजर एक्सीडेंटल डैमेजेस रिजल्टिंग टू कैपिटल लॉस. तो कैपिटल लॉस यानी कि सडन रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एन असेट is not considered into depreciation. What is considered under depreciation is the reduction in value of an asset due to normal wear and tear, expected obsolescence and minor accidental damages. इन तीनों को कवर करने के लिए an owner of an asset will create a depreciation reserve fund which will help him replace this particular asset after a particular time period. Now, coming back to the concept of gross and net product. Gross expense will be inclusive of depreciation and net expense will be exclusive of depreciation. So, gross expense, gross value of product or gross income will be inclusive of depreciation, whereas net expenditure or income or value of output will be exclusive of depreciation. We can further understand this with the help of an example. A school buys 1000 desks at the rate of rupees 1000 per desk, hereby making a total expenditure of 1000 into 1000, that is 10 lakh rupees. Now, out of these 1000 purchases, ये जो 1000 डेस्क इसने परचेज किए हैं, इसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया. पहला 200 डेस्क का एक ऐसा पार्ट विच वॉज बीइंग यूज्ड टू रिप्लेस, जो कि पुरानी डेस्क को रिप्लेस करने के काम में लिया जा रहा था. Whereas जो बाकी का 800 था, that was for new students, new admission. Now, these 200 desks represent depreciation because this expenditure is being used to replace the old worn out asset. Whereas new 800 desks that the school has purchased will be used to teach new students, and therefore 200 into 1000, that is 2 lakh, will be considered as depreciation,
and 800 into 1000, that is 8 lakh, will be considered under expansion of productive capacity. यहाँ पे ये 10 lakh will form the gross expenditure incurred by the school, whereas this 2 lakh will represent the depreciation, and this 8 lakh will represent the net. This gross minus depreciation will represent the net expenditure incurred by the school. अंडरस्टैंड कि यहाँ पे इन दोनों का क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है. वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर एन इकोनॉमी टू डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रॉस एंड नेट एक्सपेंडिचर. This is because net expenditure represents expansion in the productive capacity of the economy. As seen in this example, ये 800 into 1000, that is 8 lakh rupees का जो final expenditure, जो net expenditure स्कूल ने incur किया, this is representing कि स्कूल के पास में कितने नए students आए. Whereas this 200 into 1000 was representing कि पुराने assets को replace करने के लिए स्कूल ने कितना पैसा खर्च किया. So this expenditure, this 2 lakh rupees of expenditure is not expanding the productive capacity of the school, whereas these 8 lakh rupees was representing the net expansion in the productive capacity of the school. यही चीज़ जब हम इकोनॉमी के लेवल पे लगाएंगे तो नेट एक्सपेंडिचर और नेट इनकम और नेट वैल्यू ऑफ आउटपुट और नेट प्रोडक्ट विल रिप्रेजेंट द एक्सपेंशन इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, whereas gross expenditure will represent the overall expenditure made by the economy, that is inclusive of replacements of old assets that has been made. Here I would again repeat one thing, and that is for an economy, as far as national income accounting is concerned, हम चाहे एक्सपेंडिचर बोलें, चाहे इनकम बोलें, चाहे वैल्यू एडेड बोलें, चाहे वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलें, चाहे प्रोडक्ट बोलें, इन सब का मतलब एक ही है. ऑल दीज हैव टू बी equal to each other. Why? That we have already explained in the previous slide. The next classification that we need to consider here is on the basis of domestic and national product of an economy. इसका एक ब्रीफ हमने वीडियो नंबर 1 में भी देख चुके हैं. Domestic product refers to value of output generated or income generated within the domestic territory of an economy. एक इकोनॉमी की डोमेस्टिक टेरिटरी में कुल मिला के कितनी इनकम बनाई गई, कितनी इनकम उगाई गई, कितनी इनकम कमाई गई, उसको हम लोग बोलेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक इनकम. नाउ कम्स इन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी. What is a domestic territory? याद रखिएगा, domestic territory refers to the economic territory of an economy. This is a much wider concept as compared to the political territory of a country. इकोनॉमिक टेरिटरी को अगर एक सिंपल सी भाषा में समझें, एक लेमैन की लैंग्वेज में समझें, तो इट रेफर्स टू अ प्लेस, इट रेफर्स टू द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री जहाँ पे उस कंट्री के नियम और कानून के हिसाब से इनकम कमाई जाएगी और पैसा खर्च किया जाएगा. देखते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन कौन सी जगह शामिल होती हैं. नंबर 1, डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ एन इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री. यानी कि मेरी कंट्री के मैप के ऊपर जो जो जगह मेरी कंट्री की हिस्सेदारी में दिखाई गई हैं, all of them will form a part of the economic territory, the domestic territory of my country. The second territory that is included in domestic territory is the embassies and high commissions of my country that are established anywhere in the world. मेरी कंट्री की हाई कमीशंस और एम्बेसीज
चाहे दुनिया की किसी भी कंट्री में होंगी, वो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएंगी। Thus, लंदन में बनी हुई इंडियन गवर्नमेंट की हाई कमीशन विल बी इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरी। सिमिलरली, इंडिया में बनी हुई रशिया की एम्बेसी विल बी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ रशिया, क्योंकि यहाँ पे जो लंदन में हमारी हाई कमीशन थी, वहाँ पे जो भी पैसा कमाया जा रहा था, लोगों को तनख्वाहें पे की जा रही थी, खर्चा किया जा रहा था, all of that were as per the norms laid down by the government of India. Whereas रशियन एम्बेसी जो कि इंडिया में बनी हुई है, वहाँ पे जो भी पैसा खर्च किया जाएगा, लोगों को तनख्वाहें बांटी जाएंगी, वॉट एवर एक्सपेंडिचर इज बीइंग इनकर्ड एट दैट पर्टिकुलर प्लेस इज एज पर द नॉर्म्स विच हैव बीन लेड डाउन बाय द रशियन गवर्नमेंट। एंड देयरफॉर याद रखिएगा, जिसकी एम्बेसी, जिसका हाई कमीशन, उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी। The third region that is included in domestic territory is the planes and ships parked or in transition anywhere in the world। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे हवा में या समंदर में, मेरी कंट्री के शिप्स और प्लेन्स ट्रांजिशन में होंगे या किसी कोने में पार्क हुए हुए होंगे, वो मेरी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी बन जाएंगी। बिकॉज अगेन द इनकम्स, द एक्सपेंडिचर्स at those places are as per the norms laid down by the government of India. The fourth region that we include under domestic territory is the oil vessels in international waters. So these four form all those areas wherein my domestic territory is applicable. यहाँ पे जितनी भी इनकम जनरेट की जाएगी, जितनी भी इनकम कमाई जाएगी, वो मेरी कंट्री की डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट कम्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट refers to the income generated by the normal residents of an economy। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। ध्यान से सुनिएगा। A person is considered to be the normal resident of that country wherein his or her economic interest lies। What do we mean by economic interest? जहाँ से generally वो व्यक्ति कमा खा रहा है, जहाँ से generally वो अपनी इनकम कमा रहा है, तो आप उस कंट्री के रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे, जहाँ से जनरली आप अपनी इनकम कमाते हैं। Here comes in a very important concept. Do not consider normal residentship and citizenship to be same। नॉर्मल रेजिडेंटशिप और सिटीजनशिप दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। आप सिटीज़न एक कंट्री के हो सकते हैं और नॉर्मल रेजिडेंट दूसरी कंट्री के हो सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हमारी कंट्री में है मिस्टर अक्षय कुमार द एक्टर। अक्षय कुमार इज़ ऑफिशियली द सिटीजन ऑफ कैनेडा, बट ही इज़ द नॉर्मल रेजिडेंट of India because he is generally earning his income from India, and therefore he is the normal resident of India. Thus, reconciling it, national product refers to the income earned by the normal residents of a country. इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेट्स से इन्फोसिस ने अपने कुछ इंजीनियर्स को इंडिया से हायर करके अमेरिका एक ऑफ साइट प्रोजेक्ट के लिए भेजा। नाउ दीज इंडियन सिटीजन्स हैव बीन रिजाइडिंग इन अमेरिका फॉर लेट्स से अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, और अब वो जनरली स्पीकिंग वहीं से अपनी इनकम को कमा रहे हैं।
Now, till the time they come back to India, they will be considered as the normal residents of America, but they will continue to be the citizens of India. सिमिलरली हमारी कंट्री में सैमसंग अपने लिए एक कंट्री हेड को साउथ कोरिया से भेजती है, जो कि यहाँ पे पिछले 4 साल से रह रहे हैं. नाउ ही इज़ द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया. यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है नॉन रेजिडेंट इंडियंस का, यानी कि ऐसे लोग जो इंडियंस तो हैं बट दे आर नॉट द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, दे आर नॉट द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया. इसके और भी कई एग्जाम्पल्स देखे जा सकते हैं जो हम आगे आने वाली एक्सरसाइजेज में देखेंगे. बट याद रखिएगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम रेफर्स टू द इनकम generated or earned by the normal residents of India. Let us now understand how are we going to convert domestic product to national product or vice versa. Understand this. Let us say this particular region represents the domestic territory of India. Now we know, हमें ये पता है कि इस टेरिटरी में रहने वाले ज़्यादातर लोग हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे. द पीपल हु आर रिजाइडिंग इन दिस डोमेस्टिक टेरिटरी, मोस्ट ऑफ देम विल बी नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया. डोमेस्टिक इनकम मतलब मेरी जगह पे कमाई गई इनकम, चाहे जो भी कमाए. इसी तरीके से नेशनल इनकम मतलब मेरे लोगों के द्वारा कमाई गई इनकम, चाहे वो कहीं से भी कमाएं. तो हमें क्या करना है, हमें डोमेस्टिक इनकम को कन्वर्ट करना है नेशनल इनकम में. यानी कि इस जगह पे कमाई गई इनकम में से मैं उन लोगों की इनकम को माइनस कर दूंगा जो कि मेरे यहाँ से पैसा कमा के बाहर लेके जा रहे हैं. यानी कि आई विल रिड्यूस द इनकम, आई विल डिडक्ट द इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट्स फ्रॉम दिस एरिया and I will count in the income of such people who are residents of India. यानी कि we will add up the factor income from abroad. Similarly, I will reduce factor income to abroad. मेरे रेजिडेंट्स ने बाहर की दुनिया से जो पैसा कमाया उसे मैं इसमें इंक्लूड कर लूँगा और मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में बाहर के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने जो पैसा कमाया उसे मैं यहाँ से रिड्यूस कर दूँगा. सिंपल सा एग्जाम्पल, हमारी एक कंपनी लेट्स से बजाज अर्न्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड, we will include that income because that is the income earned by my residents, and I will reduce the income earned by a foreign company, let's say कोका कोला. मेरी कंट्री में जो पैसा कमा रही है उसे मैं रिड्यूस कर दूंगा. सो आई हैव रिड्यूस्ड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड आई हैव एडेड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. यानी हमने क्या कैलकुलेशन देखी, एक सिंपल सी, हमने डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एब्रीविएटेड, वी आर एब्रीविएटिंग इट एज फीफा, को ऐड कर दिया एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को यहाँ पे माइनस कर दिया. एज अ रिजल्ट व्हाट वी गेट इज आर नेशनल प्रोडक्ट. दिस term together is known as net factor income from abroad. हम यहाँ पे देंगे इसे एक बड़ा प्यारा सा नाम, नफीफा. बहुत काम की चीज़ होगी, आगे ध्यान से देखेंगे. द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दैट वी गेट हियर इज इनकम जनरेटेड एट मार्केट प्राइस and income generated at factor cost. Let us again understand this with the help of a simple example. Let's say you went to Domino's to buy pizza, wherein it was mentioned that the price of this pizza was rupees 299. But जब आप बिलिंग करवाने के लिए गए तो the bill comes out to be equal to let's say 330. I'm sure
this happens to you. Now the question is कि ये 299 रुपये, 299 रुपीज़ 330 रुपये में कैसे कन्वर्ट हुए? क्या है दोनों के बीच का डिफरेंस? दीज 31 रुपीज़. What are these 31 rupees? This is GST, goods and service tax, that you paid on this pizza, which ended up increasing the price of this particular pizza from rupees 299 to rupees 330. Let's understand this breakup. ये 299 रुपये किसके पास में जा रहे हैं? ये 299 रुपये जा रहे हैं डोमिनोज के पास में, which forms the factor income of Domino's. These 31 rupees, these are going to the government in the form of indirect taxes, and these 330 rupees happens to be the market price of the commodity. Thus, ये 299 रुपये हुए फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर इनकम. ये 31 रुपीज़ हुए GST, दैट इज indirect tax, and this 330 rupees that you finally paid became the market price of the commodity. अब हमने सरकार से झगड़ा किया. हमने कहा आपने 299 रुपये की चीज़ को 330 रुपये का बनवा दिया बिकॉज ऑफ द टैक्सेस दैट यू वर चार्जिंग. तो सरकार ने क्या जवाब दिया? सरकार ने आपसे कहा कि जिस तरह से हम टैक्सेस लगा के 299 रुपये के पिज्ज़ा को 330 रुपये का बना देते हैं, उसी तरीके से देर आर सेवरल कमोडिटीज़ इन द कंट्री जिन्हें हम सब्सिडीज दे के सस्ता बना देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द गैस सिलेंडर्स, द LPG सिलेंडर्स दैट वी यूज़ एट होम, लेट्स से द प्राइस हैपन्स टू बी 700 rupees and government pays a subsidy of let's say 300 rupees. The final market price that you pay for this cylinder happens to be just 400 rupees. तो ये 700 rupees क्या हुआ? ये 700 rupees हुई फैक्टर कॉस्ट. अगेन फैक्टर कॉस्ट. लेट्स से आपने भारत पेट्रोलियम का आपने सिलेंडर खरीदा, सो दिस 700 रुपीज़ हैपन्स टू बी द फैक्टर कॉस्ट ऑफ भारत पेट्रोलियम, यानी कि उन्हें 700 रुपीज़ चाहिए ही चाहिए, चाहे आप दें चाहे गवर्नमेंट दें. इसमें से 300 रुपीज़ क्या दी गई? सब्सिडी दी गई. ये सब्सिडी दी गई. व्हाट इज़ अ सब्सिडी? सब्सिडी इज़ द ट्रांसफ़र पेमेंट मेड बाय गवर्नमेंट टू द कॉमन पीपल ऑफ द कंट्री. सो ये 300 रुपये की सब्सिडी दी गई. कैसे दी गई? सरकार ने भारत पेट्रोलियम को कहा कि भैया तुम्हारा 700 रुपये का जो सिलेंडर है तुम मार्केट में कितने में बेचोगे? 400 रुपये में बेचोगे. भारत पेट्रोलियम ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा सिलेंडर तो 700 रुपये का है, अगर 400 रुपये में बेचेंगे तो उस पर तो हमारा नुकसान होगा. तो सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा जो 300 रुपये का तुम्हारा नुकसान है वो उसकी भरपाई सरकार करेगी इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी. देयरफॉर फैक्टर कॉस्ट में से सब्सिडी को रिड्यूस किया. अगेन व्हाट वी गेट फाइनली इज द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी. दस अगर हम लोग एग्रीगेट लेवल पे देखें, पूरी कंट्री के लेवल पे देखें, फॉर अ कंट्री एज अ होल, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज will form the market price of the expenditure that we have incurred, the output, the value of output that we have produced, or the income that we have generated in an economy. इन दोनों को, indirect taxes और सब्सिडी को हमने साथ में नाम दिया, इसको हमने साथ में नाम दिया net indirect taxes. Now we have gone through 3 classifications of national product or domestic product or for that matter income of a country. कौन कौन से 3 क्लासिफिकेशंस देखे? हमने कहा इनकम, कंट्री की इनकम या तो ग्रॉस हो सकती है या नेट हो सकती है. हमने कहा एक कंट्री की इनकम, एक इकॉनमी की इनकम या तो डोमेस्टिक हो सकती है या नेशनल हो सकती है. इसी तरह से हमने कहा द इनकम जनरेटेड बाय एन इकोनॉमी कैन बी कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट
और एट मार्केट प्राइस। ये तीन क्लासिफिकेशंस हमने देखे। नाउ बाय यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज थ्री वी कैन डिराइव 8 डिफरेंट एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। कौन कौन से हैं देखिएगा। नंबर 1, GDP at MP, that is gross domestic product at market price. Number 2, ग्रॉस की जगह हमने कर दिया नेट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एंड द फोर्थ वन बिकम्स नेट national product at market price. Now all these four aggregates had market price. So now we will calculate them on factor cost. So the fifth one becomes gross domestic product at factor cost. The sixth one becomes net domestic product at factor cost. The seventh one is the gross national product at factor cost, and the last and the final one is the net national product at factor cost. These are the different 8 aggregates of national product of an economy. एक इकोनॉमी की इनकम को कैलकुलेट इन 8 डिफरेंट फॉर्मेट से किया जा सकता है। इन 8 डिफरेंट फॉर्मेट्स में उस इकोनॉमी की इनकम को देखा जा सकता है। Next would come in the methods of calculating national income. But before that, we need to be very clear about the relationship that exists between these 8 different aggregates. आपसे यहाँ पे अगर इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है तो you should be clear with it. कैसे? For example, अगर आपसे पूछा गया define gross domestic product at market price, तो how would you define it? You would define it as the value of output in an economy that is inclusive of depreciation because it is being calculated at gross, generated within the domestic territory of an economy because this is D, and inclusive of net indirect taxes because this is being calculated at market price. Similarly, if I ask you the definition of net domestic product at market price, how would you define it? You will define it as it is the value of output that is exclusive of depreciation, generated within the domestic territory of an economy, and that is inclusive of net indirect taxes. If I go on to ask you the definition of gross national product at market price, you would define it as the value of output generated in an economy that is inclusive of depreciation because this is gross, generated by the normal residents of an economy, and that is inclusive of net indirect taxes because this is being calculated at market price. Similarly, if I ask you the definition of NNP at FC, your answer should be this is the value of output that is exclusive of depreciation because this is net, generated by the normal residents of an economy because this is national product, and that is exclusive of net indirect taxes because this is being calculated at factor cost. एग्जाम में हमारे पास में क्वेश्चंस आएंगे wherein we will be required to convert one of these aggregates to the other. But for that, we need to be very, very clear about how are we going to convert one of the classifications to other. यानी कि मुझे पता होना चाहिए कि मैं ग्रॉस प्रोडक्ट को नेट में किस तरह से कन्वर्ट करूँगा। मुझे पता होना चाहिए कि मैं नेशनल प्रोडक्ट को डोमेस्टिक प्रोडक्ट में किस तरह से कन्वर्ट करूँगा, और साथ ही I should be knowing how would I convert product value of product at market price to factor cost. तो we'll just reconcile what we have learned till now. ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन को। सिमिलरली जब नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो आप डेप्रिसिएशन को ऐड कर लेंगे। जब आपको नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाना है तो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, दैट इज
नफीफा। सिमिलरली अगर मैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट के ऊपर जाना चाहता हूं तो आई विल ऐड नफीफा। सिमिलरली मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए आई विल हैव टू रिड्यूस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे कन्वर्ट करना चाहता हूं तो आई विल हैव टू ऐड इनडायरेक्ट टैक्सेस। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स से यू वांट टू कन्वर्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए आप रिड्यूस करेंगे डेप्रिसिएशन को। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए आप ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए आप रिड्यूस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। जब जीडीपी एट एमपी में से आप ये कैलकुलेशंस अप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट इज एनएनपी एट एफसी। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, out of the various aggregates, out of the 8 aggregates that we saw, we refer NNP at FC as the national income. क्या रीजन है इसका समझिएगा। नेशनल इनकम जब मैं किसी एक एग्रीगेट को बोलता हूं तो इट शुड हैव फॉलोइंग कैपेसिटीज। नंबर 1, इट शुड बी एबल टू टेल मी कि मेरी कंट्री में एक्सपेंशन इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी कितना हुआ है, इसलिए ग्रॉस या नेट, तो आई वुड से नेट। नेक्स्ट, इट शुड बी एबल टू टेल मी मेरी घर के लोगों ने, मेरी इकोनॉमी के लोगों ने कितनी इनकम कमाई है, देयरफॉर डोमेस्टिक या नेशनल, तो इट वुड बी नेशनल। तीसरा, I need to reduce, I need to do away with the net indirect taxes and subsidies because these are transfer payments and therefore market price or factor cost to factor cost. Therefore, NNP at FC gives you the real condition of an economy and therefore we refer it as the national income. That's it from this video. Catch you up in the next one. Thank you.